लाइव स्टार्ट है जहाँ वीडियो आसु करती स्क्रीन लाइव स्ट्रीमिंग हाँ वीडियो भी स्लो है मैं भी कर देता सूची सुनता मैडम मुझे पहले स्टार्ट है ना जन मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए तब जय गाथा जन गण मंगल नायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय हे भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय टिके केते बेले आसंतो ठंडा के 10 नले 10 टा रे हेलियो 10 टा हम घंटा रे करदवा टिके छोटो काम अछि विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा सदा शक्ति सरसाने वाला प्रेम सुधा बरसाने वाला सदा शक्ति सरसाने वाला प्रेम सुधा बरसाने वाला वीरों को हर्षाने वाला वीरों को हर्षाने वाला मातृभूमि का तन मन सारा झंडा ऊंचा रहे हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा आओ प्यारे वीरों आओ देश धर्म पर बलि बलि जाओ आओ प्यारे वीरों आओ देश धर्म पर बलि बलि जाओ एक साथ सब मिलकर गाओ एक साथ सब मिलकर गाओ प्यारा भारत देश हमारा झंडा ऊंचा रहे हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा शान नहीं जाने पाए जाने जाने चले जाए शान नहीं जाने पाए चाहे जान बले ही जाए विश्व विजय करके दिखलाए विश्व
विजय करके दिखलाए तब होवे हमारा झंडा देखा जो यूट्यूब रे वाईफाई कनेक्शन दे केतल प्रोग्राम हला असुविधा बॉबी माने ए जाए हां माने बाहर न Dr. Kumar, teacher, this is Meena Naik, learned colleagues, caring parents, and dear students, those who have joined us online through YouTube Live. I, on behalf of the entire school, wish you all a very happy Republic Day on this auspicious 73rd Republic Day celebration of the country. I extend a hearty welcome to all of you. All of us know that during this unprecedented time of COVID, there are many restrictions which are being followed, and because of that, we are on live today. There are many programs that we are going to conduct on this occasion of the 73rd Republic Day, which we are celebrating on the occasion of the 75th Azadi Ka Amrit Mahotsav. All of us know Republic Day marks the day when the constitution of the country came into effect on 26th January 1950. And we became a sovereign nation, declaring ourselves as a republic. So this is a day to celebrate our constitutional rights, a day to be reminded of our responsibilities, and a day to pay tribute to our founding fathers. And it is also a day to pay tribute to the great sons of this land. Now, there are many activities that we will conduct online. Before that, I feel happy to tell all of you that NCC cadets of 2019 batch of our Vidyalaya, they have successfully completed the age certificate examination and the annual training camp with the guidance of our associate NCC officer, Mr. Bhavani Sankar Behra. They will receive the certificate. I will call the name of the student. You will come one by one and receive the certificate from respective principal, sir. First, Master Diptesh Ranjan Pradhan. Followed by this Diptesh Pragyan Priyadarshi. After Pragyan, I would like to call Aditya Singh. All the students, they have successfully completed their training camp and the requirement for the NCC A certificate. Next, Visweswar Padihari. I would like to call Sanjeev Kumar Nayak to come next. Followed by Ashish Kumar Naik. I would request all our teachers and those who are online also to applaud the participant here by giving a big round of applause. Let me now call SS Satya Prakash. Next, Satya Sai Mahapatra.
NCC cadets, they learn about discipline. After that, I would like to call Rudra Narayan Naik. Next on the line, Muhammad Arsalan. Saubhagya Mohanty. After that, Someshwar Malli. मते लागुची सेया अग्रवाल तो मने पडुची दीप्ति अग्रवाल बोल दीप्ति ना दीप्ति दीप्ति मते बेसी कॉन्फिडेंट मो दीप्ति रे अछि किनो श्योर नो विशेष अग्रवाल और म्यूजिक टीचर Arup Sethi. Jitesh Prusti. स्टूडेंट्स का लगा टीचरों की स्टूडेंट्स का ना सामने काम कर पास as the students Let me call Archit Das after this. Om Vishnu Patra. After Om, Jagat Jyoti Pradhan. And last but not least, Suryakanta Tehur. Let us motivate all our NCC cadets with a big round of applause. Congratulations to all of you. Thank you, sir. This certificate shows your dedication, your commitment for the course and the principles, discipline, all the things that you have learned. Now, let me request respected principal, sir, to address all of us, those who are here offline and those who have joined us online also. Respected Vice Principal, all the learned teachers, my loving NCC cadets, all the children, those who are watching this Republic Day program in virtual mode, and their parents and the guests. आप सभी को 73वां गणतंत्र दिवस की बहुत सारी बधाइयां। 72 ना 73 मेरे बच्चों कौन लिखी और मेरे शिक्षक साथियों, आप सभी को मालूम है आज के दिन की क्या महत्व है। ये ऐसे एक दिन है जिस दिन को हर भारतवासी हर्ष उल्लास से मना रहे हैं। इस वजह से मना रहे हैं, जिस ट्रस्ट से हमको आजादी मिला है, जिस बलिदान से, जिस शहादत से हमको आजादी मिला है, और जो वीर पुरुषों ने हमको आजादी दिया और इतने अच्छे शासन व्यवस्था गणतंत्र हमारे हाथ में डाल दिया, इसको हम बजाय रखना
इसको मजबूत करना ये हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए आज के दिन में हम सलाम करते हैं हमारे तिरंगा को, सलाम करते हैं वो वीर पुरुषों को जिन्हें हमें आजादी दिया, सलाम करते हैं और महान नेताओं को जिन्होंने हमें ऐसे संविधान दिया जिससे हम आजाद से बोल सकते हैं और आजाद से अपना बात सभी के सामने रख सकते हैं। ऐसी शासन व्यवस्था हमारे पास है। इस शासन व्यवस्था से हम अपने आप को महसूस करते हैं कि हम वर्तमान व्यक्तित्व प्रकाश करने के लिए, विकास करने के लिए हम सक्षम हैं। आप सभी को मालूम है कि आज देश 23वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और साथ साथ इस दिवस का इस साल के महत्व इतना ज्यादा है कि 75वां जो हम बोल रहे हैं स्वाधीनता दिवस है, इसी के अवसर पर आजादी की अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। बहुत सारे प्रोग्राम भारत सरकार के द्वारा अपनाया गया है। आजादी के अमृत महोत्सव का महत्व के बारे में और इसमें हमारी जिम्मेदारी क्या होना चाहिए, इसके बारे में बहुत सारे प्रोग्राम और कार्यक्रम आजकल सारा देश में मनाया जा रहा है। हमें क्या करना, हमारा दायित्व क्या है, मैंने बताया हूं कि हम अपना जो गणतंत्र है उसको मजबूत करना। हम कैसे मजबूत करें? हमको जो आजादी दिया गया है, ये आजादी का सदुपयोग करें, इसका अवसर उठाएं। जब हम अपना आजादी के बारे में सोचते हैं उस टाइम में हमको देखना है दूसरा का आजादी के बारे में कोई नुकसान न हो, ये हमारा ध्येय होना चाहिए। हम जब हमारा विकास के बारे में सोच रहे हैं, हमारा विकास से दूसरा कुछ फायदा हो, तब हो सकता है ये पृथ्वी की आजादी है और ये सही मायने पर आजादी है और सही मायने में हम गणतंत्र शासन व्यवस्था का सम्मान करते हैं। हम अपने बीच में भाईचारा बनाए रखें। आज आप सबको मालूम है 2 दिन पहले नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे बनाया गया। मुझे सौभाग्य मिला था वो प्रोग्राम देखने के लिए, जो जातीय स्तर पर एक वेबिनार वर्चुअल मोड में बनाया गया था। सारा भारत वर्ष से विभिन्न शिक्षा अनुष्ठान से 75 गर्ल्स से वो अपना अपना एरिया पर जो कृतित्व हासिल किए उनको बुलाया गया। जब उनको पूछा गया कि आप क्या बनना चाहते हैं, उनका ये सभी का एक राय था कि हम जिस एरिया में है, हम जहां पर उठ के चले हैं, हमारा जो भी अचीवमेंट है वो अचीवमेंट से दूसरा किसे फायदा मिलेगा, हम इसके लिए कार्य करेंगे। कितना अच्छा बात है। हम सोचते हैं अपना अचीवमेंट के बारे में, लेकिन अपना अचीवमेंट से दूसरा कैसे फायदा मिले इसके बारे में हम नहीं सोचते, जिस वजह से परेशान खड़ा हो जाता है। हम किसी को बोलते हैं जो नहीं, हमारा अचीवमेंट वजह से दूसरा को फायदा हो गया तो किसी को भी परेशानी नहीं होना चाहिए। किसी का अचीवमेंट के वजह से दूसरा बहुत का प्रेरणा रहता है, साथ रहता है, ये हमको स्वीकार करना चाहिए और बताना चाहिए। आज देखो देश में जो कुछ भी अचीवमेंट हो रहा है, वो हो सकता है एजुकेशन सेक्टर में हो, देश की रक्षा प्रणाली में हो। हम आत्मविश्वास और आत्मस्वावलंबी बनने जा रहे हैं।
कि स्वावलंबी हम कैसे बन रहे जब हमारे पास में आत्मविश्वास है। आज रक्षा क्षेत्र में एक ऐसी अचीवमेंट हमारा पास है, हाँ दूसरा कंट्री हमको आज आग्रह कर रहा है जो आपके पास जो कुछ भी सुविधाएं हैं हमें दे। कितना गर्व की बात है, कितना गौरव की बात है हमारा देश के लिए। हम स्वावलंबी हो रहे हैं, तो हमें भी ऐसे सोचना है जब हम ऐसे कुछ करें, अपना क्षेत्र जहां पर है उस क्षेत्र में हम ऐसे कुछ करें जब हम स्वावलंबी होंगे और दूसरा को स्वावलंबी कराएं। इसके लिए अपना जो मन है इसको थोड़ा सा विस्तार करना पड़ेगा। हम इसको संकुचित करेंगे तो नहीं होगा। मन धन वन से हमको काम करना पड़ेगा। कुछ दिन पहले आप लोग को मालूम होना चाहिए हमारा विद्यालय को हमारे ऑनरेबल कमिश्नर मैडम का विजिट हुआ था और विद्यालय की हर क्षेत्र की वो देखे हैं और देखने के बाद उनका जो विश्वास था कि नहीं ये विद्यालय जैसे चल रहा है, इस विद्यालय की जो कुछ भी काम चल रहा है दूसरा विद्यालय भी इसको देखना चाहिए। जिस वजह से इसका परिणाम स्वरूप उस दिन मीटिंग में बताया था कि ऑल इंडिया में कुछ विद्यालय एग्जाम्पलर विद्यालय के रूप में चुना गया है। प्रथम सोपान में 25 विद्यालय को चुना गया है, जिसमें 15 केंद्रीय विद्यालय है और 10 नवोदय विद्यालय है। और 15 केंद्रीय विद्यालय से जो ऑल ओवर इंडिया में जितना भी केंद्रीय विद्यालय है अबाउट 1250 केंद्रीय विद्यालय है, उससे 15 केंद्रीय विद्यालय को चुना गया है। उसमें हमारा केंद्रीय विद्यालय का नाम है। ये हमारे लिए और आप लोग के लिए और सभी के लिए गर्व का बात। ये सक्सेस किसी एक प्रिंसिपल की वजह से नहीं है, कोई एक टीचर की वजह से नहीं है, ये कंबाइंड एफर्ट ऑफ स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, टीचर्स एंड ऑल द एडमिनिस्ट्रेटर। सभी की एक मिलित सहयोग से ये काम आज जो सक्सेस हुआ है, काम हमको मिला है, ये काम को हम आगे कैसे लेके जाएंगे इसके बारे में भी सोचना है। हमें और एक भी टास्क मिला है। आप लोग को मालूम है कि जितना भी ओलंपियन है टोक्यो ओलंपिक में जो पदक हासिल किए थे वो केंद्रीय विद्यालय और कुछ विद्यालयों को विजिट कर रहे हैं और हमारा रीजन से हमारा केंद्रीय विद्यालय का नाम चुना गया। क्यों ये सब किया जा रहा है? जो हमारा भावी पीढ़ी है, जो हमारे बच्चे हैं, उनको प्रेरित करना है, उनको उत्साहित करना है। ये अपने अंदर में जो कुछ भी प्रतिभाएं हैं उसको विकसित करें। कहीं भी प्रतिभाओं की ऐसे ही अपने अंदर छुपा है, ऐसे छुपी हुई मत जाए, इसको विकसित करें, जिस वजह से उसको तो फायदा मिलेगा, उसका परिवार को फायदा मिलेगा, उसका लोकेलिटी को फायदा मिलेगा और इसके साथ साथ देश को भी फायदा होगा। हम इसके लिए सोचना है। तो मैं आप सभी को रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जो आपके अंदर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके अंदर में जो कुछ प्रतिभा है जिस एरिया में भी है, आप एक अभिभावक रूप से इनको मदद करें, उनको उत्साहित करें और एक टीचर, एक शिक्षक रूप में आप उनको पहचाने और उत्साहित करें। और ये आप सबको मालूम होना चाहिए, पेंडेमिक वजह से सबसे वर्स्ट डॉक्टर जो है कि वो शिक्षा क्षेत्र है, सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। और इस टाइम में हम सभी का
एक गुरु दायित्व है कि जिस वजह से हमारे बच्चे प्रभावित हुए हैं, जो 2 साल उनका समय का सबसे इंपॉर्टेंट हम कहते हैं स्टेज होता है, उस स्टेज में उनको जो नुकसान हुआ है, ये नुकसान को कैसे हम भरपाई करें। उनके बीच में जो उनका अंदर में जो कॉन्फिडेंस लेवल है, जो डिफरेंट प्रोग्राम्स में वो सामने निकाल के आता है, इसको हम कैसे विकसित करें, इसके बारे में हमको सोचना है। आज हम ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में क्लास कर रहे हैं, कभी ऑनलाइन कभी ऑफलाइन। ये सभी के लिए चैलेंजिंग टास्क है, एक शिक्षक के लिए, एक जो एडमिनिस्ट्रेटर है उनके लिए, और इसके साथ साथ सबसे जो प्रभावित बच्चों के लिए। कभी क्या होता है, ये ट्रांजिशन फेज में जब हम आ जाते हैं, हमको देखना है कि हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। क्या ये ट्रांजिशन फेज से हम कैसे ऊपर जाएंगे उसके बारे में सोचना है, कि इसको कुछ और प्रॉब्लम में डालने के लिए हम कुछ कदम उठाना है। हम ऐसे कुछ करें जिस वजह से जो ट्रांजिशन फेज में आप जाते हैं, उस ट्रांजिशन फेज से हम ऊपर जा सके और सभी का कल्याण हो सके। इसके बारे में हमको सोचना है। हम अपने थोड़ी से प्रशंसा के लिए ऐसे कुछ काम मत करें जिससे अपना फैमिली का, स्कूल का और समाज का कुछ बदनाम हो जाए। ये इसके बारे में हमको सोचना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को मालूम है कि जब हम आज आजादी की अमृत, आज आजादी के अमृत समारोह के अवसर पर ये जो आज की पवित्र दिन पर ये प्रतिज्ञा लग रही है कि हमारे अंदर में जो कुछ भी प्रतिभाएं हैं, इसको विकसित करने के लिए हम ठान लें। जो कोई चुनौतियां आएगा, ये चुनौती का हम सामना करेंगे, और इसके लिए किसी का मदद जरूरत है तो विदाउट एनी हेजिटेशन उसका मदद हम लेंगे। ये आप जब ठान लेंगे तो खुद आप आगे बढ़ते जाएंगे, आपको कोई नहीं रुक सकता है। इसी के साथ साथ एजुकेशन के साथ साथ बहुत सारे चैलेंज हैं। आपके द्वारा जितना भी संभव है, आपका बगल में जो लोग हैं उनके विकसित के लिए, समाज का विकसित के लिए, और आप जहां पर काम कर रहे हैं, कि जहां पर आप पढ़ रहे हैं, उनका विकास के लिए सोचे। तो ये प्रकृति में ही और वास्तव में ही वो वीर पुरुषों के लिए श्रद्धांजलि होगा। वास्तव में ही जो शहादत दिए हैं आजादी के लिए, उनके लिए श्रद्धांजलि होगा। और वास्तव में ही जो आपके माता पिता आपको पढ़ा रहे हैं, जो शिक्षक आपको पढ़ाते हैं, उनके लिए आपका एक गुरु दक्षिणा हो सकता है, ये हो सकता होगा। आप आगे चले और आपके अंदर में जो कुछ भी प्रतिभा है उसको विकसित करें और देश का नाम रोशन करें। फिर एक बार हम सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हैं और उम्मीद करते हैं हम एक उद्देश्य लेकर चले, जिसमें जिस क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं, जहां पर काम कर रहे हैं, और हमारा बगल में जो है, उनके विकास के लिए हम कुछ कर सके। जय हिंद, जय भारत। Thank you very much, sir, for inspiring all of us, motivating all of us by those kind words. Now that's it from the assembly ground. Now we will be moving live from the conference hall. Those who are online, they can see the program like group songs by student of our Vidyalaya. There are also speeches by some of our students.
then teacher speech, and even a dance performance. So please don't leave those who are online. Over to you, Pradhan sir and Sahu sir. Thank you. Thank you, sir. And students and teachers, those who are here, you can click on the link even there online, and you can also enjoy the program. Thank you, sir. सुप्रभात सबको. Yeah, and students, you will be moving to the library. Happy Republic Day. Brad Sogan! Brad Bishop Wood! Brad Samson Dodson! All the teachers are also requested to come near the principal lobby and enjoy. Good morning, everybody. Happy Republic Day to each and everyone. Dear students and parents and all stakeholders of the Vidyalaya, we are celebrating the 73rd Republic Day today in our Vidyalaya. It is an auspicious day in the history of Kendra Vidyalaya number 2 CRPF BHUBANESWAR. We love our motherland, and he is great who has great love for the motherland and the mother tongue. स्वभाव कवि गंगाधर मेहर के भाषा में मातृभूमि मातृभाषा रे ममता जा हृदय जनमी नहीं ताकू जदि ज्ञानी गणरे गणिबा अज्ञानी रहिबे काहे. So we should love our motherland. We should love the diversities in our motherland. So let's enjoy a song presented by the students of Kendra Vidyalaya number 2 CRPF Bhubaneswar, led by Mrs. Dipti Agrawal, our music teacher. Let's enjoy the Odia song. Yeah.
यही देश यही माटी ममतामयी माटी। वास्तविक ये सच है कि ये मिट्टी जो है हमारा माँ है। इसको इज्जत देने से हम बड़े ही होते हैं, उनके गोद पर हम बड़े हुए हैं। अनेकता में एकता, यह हमारी शान है। अनेकता में एकता, ये हमारी शान है। इसीलिए मेरा भारत महान है। तो इसी कड़ी में चलिए आगे हम सुनते हैं सासुजन 5वीं अ के छात्र जो कि अपना विचार रखने जा रहे हैं। मैं अनुरोध करूँगा साहू सर से वो सासुजन का प्रेजेंटेशन दिखाए। शहीदों का सपना जब सच हुआ, हिंदुस्तान तब स्वतंत्र हुआ। आओ सलाम करें उन वीरों की जिनकी वजह से भारत गणतंत्र हुआ। नमस्ते, मैं सासुजन कक्षा 5वीं क का छात्र हूँ और आज आपके सामने गणतंत्र दिवस के ऊपर कुछ कहने आया हूँ। मेरे प्यारे देशवासियों, आज हमारा भारत बड़े धूमधाम से गणतंत्र दिवस मना रहा है और यह हमारा राष्ट्र पर्व है। इसी अवसर पर आप सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त 1947 को भारत ब्रिटिश के हुकूमत से आजाद हुआ और भारत को सही तरीके से चलाने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कमेटी ने 2 साल 11 महीने और 18 दिन की कड़ी मेहनत की और एक सशक्त संविधान बनाया और 26 जनवरी 1950 में वह संविधान भारत में लागू हुआ। यह पूरे विश्व में सबसे बड़ी लिखित संविधान है। इस संविधान ने हमें अपने अधिकार के लिए खड़ा होना सिखाया और अपने देश के कर्तव्य के बारे में भी बताया। हमारे देश के स्वतंत्र और गणतंत्र के लिए जिन वीरों ने अपनी जान कुर्बान की, उनको आज हम नमन करते हैं और आज भी कुछ जवान हैं जो अपनी जान की परवाह ना करते हुए सीमा में खड़े हैं और उनकी वजह से ही आज हम चैन की सांस ले पा रहे हैं। उनको आज हम सल्यूट करते हैं। भारत माता की जय। जय हिंद। धन्यवाद सासुजन। छुट्टे हुए भी आप इतना सुंदर विचार रखें हमारा देश के बारे में, हमारा संविधान के बारे में। और इसी कड़ी में मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ। फ्रीडम इन माइंड, फेथ इन वर्ड्स। फ्रीडम इन माइंड, फेथ इन वर्ड्स, pride in our hearts, memories in our souls. Let's salute the nation. Let's salute the nation. मेरा भारत महान है। चलिए इस कड़ी में आगे सुनते हैं देवी प्रसाद से, जो कि 10वीं ग के छात्र, और वो हमको सुनाएंगे इस महान देश के बारे में, इस संविधान के बारे में। आज ये जो दिन है, पवित्र दिन है, इसका महत्व के बारे में। चलिए सुनते हैं। Let be freedom in our mind, body and soul. Strength in our words and faith towards the motherland. Let us salute this great nation on this glorious day. My respectful namaste to Honorable Principal Sir, Honorable Vice Principal Madam, Honorable Teachers, respected staff members, my dear brothers and sisters, and respected elders who are watching this video. Myself, Devi Prasad, I am a student from class 10C, wishing you all on behalf of a very happy Republic Day.
As we all know today, we all joined this online session for the celebration of 73rd Republic Day of our country. Before saying anything, I would like to thank my beloved teachers who gave me this wonderful opportunity to speak here. So me, being filled with the great feelings of patriotism and nationalism, going to express my fondness towards the nation today in front of you all. It all started with 15th of August 1947, the morning when the golden sun rose from the east and our country was free from the atrocities of British rule. It was only possible because of the valuable struggle and sacrifices of our freedom fighters, such as the great Mahatma Gandhi, the great Subhash Chandra Bose, the great Jawaharlal Nehru, the great Bal Gangadhar Tilak, and such many more immortal names. But still, we didn't have our perfection. There were many challenges to face with. Our country was in fact independent, but it was not administered as well. There was no government, no law, or no system in the country. Our country was in a dire need of a written constitution. But this country of crores, in which people of different religion, class, and caste live together. More than 1600 languages are spoken, and many places have their own cultural traditions. Making of a joint constitution for a country this much ethnically diverse was a very large task for the country makers. But finally, the work for the formation of the constitution was started, and on 29th of August 1947, a drafting committee was set up for the formation of constitution, and Honorable Dr. Bhimrao Babasaheb Ambedkar ji was the president in charge of the committee. Dr. Ambedkar, along with some great men, worked hard day and night for the formation of Constitution of India. Different ideals from throughout the world were included. The development of people, the foundation of prosperity and progress of the nation was laid down. It took 2 years, 11 months and 18 days for the formation of the constitution, until 26th of January 1950, when our constitution finally came into being. Such a constitution that led to the end of monarchy and the beginning of a new republic. Such a constitution in which everyone was seen equally, irrespective of caste, gender or religion. Such a constitution in which the common people are the most powerful as they can choose their government. So this is how our ancestors and the dignity of our common people helped to the formation of world's largest, strongest and most diverse democracy. This day comes every year, fills our hearts with patriotism, reminds us to protect democracy, and we celebrate it as our Republic Day. But still, there is one inconvenience. It's a little sad to say that our country got Swaraj in 1947, but still today our country is not internally freed because of some anti-social and negative forces of the society. Even today, the dark clouds of corruption, crime and discriminations are grooming large in the country. Economical and social issues have been prevailed in our country since decades. Religious disputes are still there in some places of our country, and slavery in the form of violence is still active. So let's come, my friend, raise this country from the demons like corruption and violence to the heights of success. Because as Sir Abraham Lincoln once said, that democracy is by the people, for the people and of the people. And people are the most prominent and powerful part of a democracy. They can do anything if they get united. As our beloved Prime Minister Sri Narendra Modi ji also said that development of India depends on the unity of people, and Ek Bharata Shrestha Bharata is the initiative of a stronger India. So in my last few lines, I just want to state that the day is not far away when India would be the instructor of the whole world. And for that result, we have to make our country stronger by protecting democracy and making the people united. With this, long live democracy, long live India, Vande Mataram. Thank you, Dev Prasad. Very nicely, you just presented your speech. You reminded us about our duties, about our rights, about our responsibilities also. Very nicely you presented. Thank you again. खूब बहती है अमन की गंगा बहने दो, खूब बहती है अमन की गंगा बहने दो, मत फैलाओ देश में दंगा रहने दो, लाल हरे रंग में न बांटो हमको, मेरे छत पर एक तिरंगा रहने दो। तो इस कड़ी पर चलिए हम आगे देखते हैं एक सुंदर सा नृत्य presented by Sanjana.
वतन वतन मेरी आवाज रही तो वतन वतन मेरी आवाज रही तो वतन वतन मेरी आवाज रही तो मैं जहाँ रहूँ जहाँ भी याद रही तो मैं जहाँ रहूँ जहाँ भी याद रही तो मेरी वतन मेरी मंजिल है पहचान तुझी से मेरी मंजिल है पहचान तुझी से तू मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे मैं वतन मेरे वतन कोई उसकी आज आने रही तो कोई उसकी आज आने रही तो परेशान मेरी जान तुझ पे चाहत रही तो परेशान मेरी जान तुझ पे चाहत रही तो वतन वतन मेरे आबाद रही तो मैं जहाँ रहूँ जहाँ याद रहे तो मेरे वतन मेरे Thank you, Sanjana Swarupa Singh of class 8C and class 8. And now we just enjoyed the song and हम ये वतन के बारे में याद कर रहे हैं, वतन को याद कर रहे हैं, उनका जो बरपुत्र और जो फ्रीडम फाइटर्स है उनको भी याद कर रहे हैं, जो महानुभाव है, जो विशिष्ट व्यक्ति हैं उनको भी याद कर रहे हैं। और इसी कड़ी में अगर हम देखें तो हमारा जो नेशनल एंथम जो लिखे हैं रविंद्रनाथ टैगोर महाकवि, तो उनको अगर हम याद नहीं करेंगे तो हम अपने ड्यूटी में अधूरा रह जाएंगे। उनका एक बात मेरे को याद आ रहा है उनका भाषा में, where the mind is without fear, where the mind is without fear and head is held high into that heaven of freedom, my father led my country awake. So let's listen from our great teacher, Mrs. Suchishmita Mahanti, who is going to present her feelings, her impression on this auspicious occasion. Madam, please.
लहू देकर तिरंगे की बुलंदी को संवारा है, लहू देकर तिरंगे की बुलंदी को संवारा है, फरिश्ते तुम वतन के हो, तुम्हें सजदा हमारा है। हम लोग जा रहे हैं सुनने के लिए मैडम सुजिस्मिता महांती से। I welcome सब देख लें। भारत एक जमीन का टुकड़ा नहीं, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। यह चंदन की भूमि है, यह अभिनंदन की भूमि है, यह तर्पण की भूमि है, यह अर्पण की भूमि है। इसका कंकर कंकर संकर है, बिंदु बिंदु गंगा जल है। आओ इस भूमि को नमन करें, राष्ट्र निर्माण करें। अटल बिहारी वाजपेयी जी की ये कविता के साथ मैं इस भूमि को आज के अवसर में सत सत नमन करती हूँ। रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, वाइस प्रिंसिपल मैम, हेडमास्टर सर, my dear friends and students. So today is the 73rd Republic Day. सबको गणतंत्र दिवस की मुबारकबाद, सबको गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। This particular day is celebrated as a grand occasion, all with military and cultural pageantry. This is celebrated. COVID-19 must have made this celebration dull, but it has not dampened the spirit. Every year after year, always we speak of the importance of this day. It may sound repetitive. Sometimes they may say, why every year? But every year a new generation is added. Every year a new consciousness is added. This 26th January 1950 is a red letter day in the life of Indian political, social and cultural spirit. As we know, everything appears to this generation has been offered in a silver platter, as if this is given, everyone takes everything for granted. But to arrive at this day, lot of hard work, lot of hard work and sacrifice has gone into it. So today when I start with my speech, I will tell you what is the significance of this 26th January 1950 and when it is celebrated year after year from this day as Republic Day. So as we know, our independence, we got our independence with lot of sacrifices, and 1947 August 15th we had our independence, and that day is celebrated as our Independence Day. As we all know, it was a very gory situation with lot of turmoil. The Britishers left India in a jiffy. Everything was hodgepodge. Nothing was settled down. We were ruled according to the Government of India Act 1935. Our constitution was not made. As we know, partition was the gory affair which happened to India. But it was decided the constitution has to be finalized. And 26th November 1949, our constitution was finalized and India had to be transformed to a sovereign republic. But we waited for 2 more months for 26th January to celebrate and to adopt our constitution. Why this 26th January? And many children may not be knowing, with all due respect to the elders, this 26th January was celebrated as our Independence Day right from 1930, when in the Lahore Congress of 1929, it was decided for Purna Swaraj.
a ultimatum was given to the British government that if they will not accept the 11-point program of the Congress, Indian National Congress, then Congress will go for a full-fledged civil disobedience movement. And that year, this happened on December 1929. And 1930, January 26th, all over India celebrated as a self-proclaimed Independence Day. No one gave us independence, but it was a self-proclaimed Independence Day. And people will be surprised. Till 17 years from 1930 to 1947 January, this day was celebrated as our Independence Day. So to commemorate this day, to keep this day in our heart, this particular day was decided that India will celebrate its Republic Day. Our constitution was adopted and enacted. We from a प्रजा से हम लोग बन गए नागरिक. From a subject we emerged as citizens, and we all had our fundamental rights with lofty ideals of sovereignty, socialism, secularism, republic, democracy, justice, equality, fraternity. We emerged a sovereign republic, and from that day onwards, this particular day is celebrated as our Republic Day. Now, students, it is very easy to acquire things. It is very easy that we get things, but to maintain it, to continue to sustain it, to upkeep that glory is so difficult. So it is our duty, it is our abiding duty that this country, and there is a fashion now, many people, so this talk about that nothing can happen to India. India is full of corruption. India में problem you आप बताओ और गिना देंगे problems. But India has come a long way. India has come a long way, and we should not go on criticizing what others are doing, what others are not doing. In our own small way, जैसे वो रामचंद्र जी के छोटे से नेवला था, वो that squirrel who wanted a small dana, small grain to be carried. In that way, in our own way, we have to contribute, we have to serve this country. Duty and corruption goes hand in hand. They are hand in gloves. We always say corruption, corruption, corruption. Corruption is not only bribe. Taking bribe is not corruption. Corruption is moral. Corruption is mental. Corruption is any small duty which we do not perform, which is given to us, is corruption. If we don't study what is given to us is corruption. When we don't abide by a particular duty, even cheating in the examination is a corruption. So every duty has to be done with utmost sincerity. छोटा सा काम भी हम अच्छे से करेंगे. Do the duty that is incumbent upon you as a religious act. जैसे धर्म को हम लोग मानते हैं, all with all fervor, small duty has to be abided by. One more thing I have to tell you, dignity of the individual has to be carried on. A country without dignity, the person without dignity, the identity is eroded. It is essential for a nation who wants to call it honorable then the nation should refuse any activity that is against the human dignity. Every day we read of oppression, every day we think of exploitation. But who is doing that? It is individuals, we individuals. That person who was emerged as from the citizens of India, the great country. So in a small way, I cannot go on reforming the whole of the world. But as students, I can tell you, have respect, have dignity for your fellow beings. So these two things, duty and dignity of others, will carry a long story of our India, and our India will become so ये देवभूमि है. This is a spiritual land. So हमें
राष्ट्र गुरु बनने हमारे हमारे कंट्री को गुरु बनने में कोई पीछे नहीं हटा सकता है. सो इफ आवर विश इज अ गुड विश, इफ आवर विल इज अ गुड विल, and our promise is a determination, no one can deter us from doing the duty. So with all sincerity we have to perform our duty and honor our fellow beings, honor our country and honor ourselves. Then only this country will be a beautiful place to live in. Thank you. सबको नमस्कार. Thank you, madam. Thank you, sir. Very nicely you presented the different facets of our constitution, the challenges before us, and you also threw light on the successful journey of India from a poor economy to a flourished economy, from a dependent nation to an independent country. Okay, so I must thank you again. Before your superannuation, you just delivered the speech very nicely, and you just inspired us, inspired the students. Thank you again. Now, a man is a true patriot. His heart beats true to his country. So let's visit virtually. Let's visit the National War Memorial. I request Mr. R.K. Sahu, PGT Computer Science, Sir is with me. He will just help you to visit the National War Memorial virtually. Sir, please. Subscribe and click the bell icon for the latest updates and notifications from the Indian Express. Almost 60 years since it was first proposed, India's National War Memorial was unveiled by Prime Minister Narendra Modi on February 25. The National War Memorial and Museum near India Gate will honor the sacrifice of 25,942 soldiers who died in the service of the nation since independence. The memorial will be a national center for civilian engagement and reverence for the forces. This is India's first National War Memorial for the fallen soldiers in the 1962 war with China, the wars with Pakistan in 1947, 1965, 1971, and in the Kargil War in 1999. And in overseas operations such as those by the Indian peacekeeping forces in Sri Lanka. The memorial was first proposed by the armed forces in 1960. This National War Memorial will keep reminding us and the generations to come the valor, the pride and dedicated selfless service of our soldiers, and will inspire them to pay their respect to our soldiers and be a soldier themselves. The National War Memorial consists of 4 concentric circles: the Amar Chakra or the Circle of Immortality, the Veerta Chakra or the Circle of Valor, the Tyag Chakra or the Circle of Sacrifice, and the Rakshak Chakra or the Circle of Protection. There are individual plaques for the soldiers who fell in battle, along with their ranks and regiments, mounted on 16 walls at the memorial. In a park adjacent to the main memorial are bronze busts of 21 awardees of the Paramveer Chakra, the nation's highest military decoration. The National War Memorial has a central obelisk, an eternal flame, and 6 bronze murals depicting famous battles fought by the Indian Army, Air Force, and the Navy. The total cost of the project is Rs 176 crore. The design by Chennai-based Yogesh Chandra Hassan was chosen through an international competition. We want the memorial to be a place where the soldiers are
involved. The parameters that we considered while designing are the design has to be more contextual and the overall design layout has to enrich the existing place. We wanted to bring in three emotions in the design: the protection, the sacrifice and the bravery. The memorial has had to negotiate determined opposition by both government representatives and heritage activists who disagreed with its location. After decades of delay, the Defence Ministry decided in 2006 that the war memorial should be erected near India Gate, but the proposal was caught in a debate within the UPA government. In 2012, 50 years after the 1962 war, then Defence Minister A.K. Antony announced that the long-standing demand for the memorial would be fulfilled. But the then Chief Minister of Delhi, Sheila Dikshit, did not want the memorial at India Gate. In 2015, the Narendra Modi government cleared funds for the memorial and museum. In 2017, a global design competition shortlisted the architect. A war memorial is considered to be a grateful nation's solemn tribute to the men who fell defending it against aggression. The National War Memorial is open every day from 9 a.m. onwards. The entry is free but restricted to a certain number of visitors at a time. ओके, जो देश के लिए शहीद हुए उनको मेरा सलाम है। जो देश के लिए शहीद हुए उनको मेरा सलाम है। अपने खून से जिस जमीन को सींचा उन बहादुरों को मेरा सलाम है। उन बहादुरों को मेरा सलाम है। तो हम लोग आज के ये पावन अवसर पर ये जो 73rd रिपब्लिक डे मना रहे हैं, उसका अंतिम पर्याय में है, अंतिम चरण में है। सो I would like to request our honorable teacher, Mr. S.K. Giri, to propose the vote of thanks of this occasion. Sir, please. नमस्कार और धन्यवाद। श्रद्धेय प्राचार्य महोदय, उप प्राचार्य महोदय, हेडमास्टर, मेरे शिक्षकगण और मेरे छात्र, आज हम 26 जनवरी मना रहे हैं अपने विद्यालय में, जिसमें केवल शिक्षक और एनसीसी के छात्र ही आए थे। बाकी आप लोग सब ऑनलाइन जुड़े हैं। फिर भी एक लंबे समय के बाद हम आपस में जुड़े। आज हमने एक दूसरे को 26 जनवरी की बधाइयाँ दी। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, भारत 1947 में पैदा नहीं हुआ। भारत एक बहुत पुराना देश है, पुराने संस्कृति सभ्यता का देश है। हमारा देश एक नया स्वरूप में हमारे सामने आया और हमने एक नए रूप को स्वीकारा, जिसको हमने संविधान कहा। सारे नियमों को हमने उसमें रखा और देश केवल उन लिखित नियमों पर नहीं चलता है। देश संस्कृति सभ्यता, हमारे जो विचार है, हमारे जो जीवन मूल्य है, हजारों सालों की जो परंपराएं हैं, वो सारा मिलकर देश चलता है। और हम हर साल इसलिए मनाते हैं कि हम ये महसूस कर सकें कि हमारा क्या कर्तव्य है देश के प्रति। समय बदलता है, मूल्य कुछ बदलते भी हैं, हमारे कर्तव्य में थोड़ी सी परिवर्तन होते हैं। इन सब को ध्यान रखते हुए आज सबने इस कार्यक्रम को सहयोग दे करके, प्राचार्य महोदय से लेकर के प्रत्येक शिक्षक, विद्यार्थी जिन्होंने यहाँ पे अपना प्रदर्शन दिया, महंती मैडम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ।
सारे लोगों ने अपना योगदान दिया इस सेलिब्रेशन के लिए, विद्यालय परिवार की ओर से और मेरी ओर से मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। असंख्य धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। धन्यवाद। कंप्यूटर चेहरा टाइप तो भला ऐसे कौन बोल दिया? ऐसे बोल दिया,